competitive examination. Tell me one thing, is your affinity towards a subject directly proportional to a chapter that you are good at? Well then, I'm sure you are aware that your rank in that competitive exam is also directly proportional to the number of chapters that you are good at. And you want maximum number of chapters to be in the good zone. Yes or no? Well, how do you achieve that? At Vedantu, we all master teachers have created a special and a very unique course just for you. We call it the micro courses. Well, now you can study any subject, any chapter at your pace in a super fun and in a super interactive way. So, what are you waiting for? Just follow this link and enroll for any micro course that you want. Not just that, there are over 2,500 plus micro courses for your access, that too at a super affordable price. I'll see you in the session. Hello प्यारे बच्चों, this is me, your master teacher Arvind Sir, and here I am with this shortcut tricks for JEE Mains session number 4. I hope that you guys have gone through the past 3 sessions, and I'm damn sure that you guys have loved this session, and here I am with this session number 4. Alright, yes, so don't forget to subscribe this channel, because on this channel we are doing all kind of videos, and for your JEE Mains also we'll be doing a lot of videos once your board exams gets over. Until that we are doing one shot revision videos so that you guys can revise each and every concept with us here on this Vedantu JEE channel only, right? So ये दिल जो धड़क रहा है आप लोगों के लिए ही है, because we want each and everyone out there to have 99 percentile plus in your upcoming board examinations. So whatever is being going on here, just make sure that you guys are following these lectures, because this will definitely change your life for sure. तो इसको जनहित में भी जारी कर देना, and don't forget to hit the like button and also share among your friends if you are getting benefited from this sessions. All right, yes, so as all of you guys I have received a lot of mails from you guys कि सर कोई टेस्ट सीरीज ऑनलाइन जो मैं दे पाऊँ जिसके अंदर अगर if I join तो मुझे उससे सबसे ज़्यादा फायदा हो. तो here I am with this amazing test series for all of you guys. It is containing 20 full length tests so that you guys can remember all the formulas that are there in your syllabus, along with important concepts and what kind of problems can be asked in your upcoming JEE examination. Test series will be based on the latest examination pattern, so you can tackle this numerical based problems also very easily. And since you guys know that 25 questions are coming in each and every subject, so from that on what kind of problems are being asked nowadays, this has been included in this. So definitely it will be helping you a lot. Subject wise analysis so that you can improve your weak subject, so that you can maximize your score in the JEE examination, and online discussion as well, so that you don't miss any of the tricks and tips that we are giving in this particular test series, so that you can enjoy and you can be the one who can be in the top 99 percentile, guys. All right, so what is the test what is the price of this test series, sir? It is 3499, but only in the case when you use this coupon code. So where you need to go in order to buy this course? Go on to vdnt.in/JEE test. All right, hurry up, it's a limited period offer. Don't forget to use this code so that instead of 14,999 you guys can grab this course at 3499. Okay, thank you so much Sanju beta, thank you so much. Yes, Liz is asking what about the JEE Sprint 2020? It's in pipeline. Very soon it will be coming up. Pulkit sir is doing a lot of preparations for that, and our team is entirely focused onto that, so that you guys can maximize your score. If you are on this Vedantu JEE channel, definitely you guys will get the notification very soon about this. All right, so don't forget to share this channel among your friends so that everybody can learn and can rock, guys. So let's go with this amazing question over here. We'll be doing a short trick so that we can solve this question like in few seconds only. Now, I can solve this JEE ka question orally if I know a little concepts of this determinant, right? Yes, as I can see in the chat box, Varshit knows this trick very well, and definitely the correct answer for this question is A, guys. Yes, why I am saying this A? Because as you guys can see that this determinant is dependent of n. So what value of n you are putting over here, the value of the determinant will be there, right? But as you guys can see in the option that in the answer box,
A, B, C, D options, there is no dependent on the value of n. Hence, if you put, let's say, n equal to 3, why I am putting n equals to 3 is because I hope you guys know that omega cube is nothing but equal to 1, right? If omega is a cube root of unity. So you guys can see that it will become 1, it will become 1, it will become 1. Similarly, this will become 1, 1 and 1. Hence, the two columns of the determinant will become same, and hence the value of the determinant has to be 0. That means the answer is A. So you guys can solve such kind of questions in 5 seconds if you are aware of such kind of tricks. So definitely it will be a big boost for all of you if you guys are solving the problems like this in your upcoming JEE examination, guys. Give me a yo if it is clear to everyone out there, and did you guys loved this trick or not? If yes, don't forget to hit the like button so that others can also can watch these videos and can learn for free, and can also see how they need to tackle the problems in the JEE examination so that they can maximize their score, guys. All right, now here you guys can see that sum of the two things is written. What is the product of these two things, guys? Is it coming independent of the value of x? Yes, sir. The product is coming independent of x. Whatever value of x I put, the product will be coming out to be independent of x. That means, can I apply am greater than equal to gm over here? Yes. Yes, absolutely, guys. So if I apply am greater than equal to gm, if I take this number as 1, let's say alpha, and this number as beta, because I don't want to waste time in the examination by writing these expressions again and again. So what I'll do, I will call this alpha and this one as beta. So alpha plus beta by 2 will be greater than equal to alpha into beta to the whole power 1 by 2. Now let me call this expression as, let's say, m. So my m by 2, or I can say m is greater than equal to twice of the product of these two, and product of these two raised to the power 1 by 2, that means it is nothing but sec alpha. Now, what is the minimum value of this capital M? Now, the minimum value of this capital M will be what? Whenever the sec alpha will be minimum? Yes? Okay. So, what is the minimum? What is the right answer of this particular question? I think I can solve it orally. Hence, you guys have got the correct answer. So, how you get a feel ki m greater than equal to gm use hoga is, when the product of the terms is coming good, definitely you should go ahead with am greater than equal to gm whenever the minimum value is asked, guys. All right, yes or no, yes or no, yes. But now there is a problem. Why is this problem? Is because you guys can see over here that this alpha plus beta is greater than equal to twice of y this sec minus sec alpha. Now this is very important. This is very, very, very important, बच्चों, है ना? Yes, इस चीज को समझना. Now if you see over here, बच्चों, तो ये चीज is always positive, है ना? And this thing is always positive. That's why you guys can apply am greater than equal to gm, है ना? ये चीज लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों टर्म्स जो इन्वॉल्व है वो पॉजिटिव है, number one, and minimum value is asked and the product is coming good. That's why we can apply am greater than equal to gm. But remember, the sec alpha going over here is in the second quadrant. Now the beauty of this question lies over here. The beauty of the question lies over here कि ये second quadrant में दिया हुआ है, and in the second quadrant the sec alpha is negative, isn't it? So if you write down that the minimum value is 2 sec alpha, it will be wrong because sec alpha is always negative given to me, and this particular thing can never come negative. Hence this has to come positive. Hence you will write minus 2 sec alpha rather than 2 sec alpha. So you need to be aware of what kind of the interval given to you. If here would have been given 0 say pi by 2, then the answer would have been 2 sec alpha. Is it clear? Yes. So it's a very, very, very beautiful question that I have given you guys, because I want you guys to focus on the particular constraints also in the given प्रॉब्लम. ऑल राइट, yes. तो इन चीजों का भी ध्यान रखना. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स दिला देती हैं. नाउ इफ यू कांट सी दिस क्वेश्चन, आई विल टेल यू कि बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, 0 से पाई बाय 216 लिखा हुआ है. Okay, and this expression I hope you guys can read. So this expression is coming out to be pi by 4k. Then the value of k will be equal to what? Is the question given to me. All right. तो बच्चों समझना,
एक प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी होगी 0 से a f of x dx, this is equal to nothing but what? This is equal to sir 0 to a f of a minus x dx. Now this property is used mostly in the trigonometric functions. जब भी trigonometric functions involved होते हैं तो ये property बड़ी use होती है. Now here I can see cot, so I can see that this property I can apply in this particular question. It can help me. Why? Because cot is a periodic function. Trigonometric functions are periodic, and definitely this in this problem I can use this one. All right, तो डालते हैं यार इस चीज को, है ना? तो क्या आ जाएगा यार, 1 ओवर x के जगह पे हम डाल देंगे, क्या डाल देंगे x के जगह पे? x के जगह पे वी कैन पुट पाई बाय 2016 माइनस x प्लस 1, और इसका पावर 1008 मेरे को दिया हुआ है. ऑल राइट, नाउ आई कैन सी दैट यहां पे पाई बाय 2 बन जाएगा माइनस दिस, सो कॉट ऑफ पाई बाय 2 minus something is nothing but tan of that something. So you can simplify this particular thing and this property can really help you. So what is the right answer coming? A, B, C या D? क्या आंसर आ रहा है यार? तो कैसे वो प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है? This is also I told you A, B, C या D? क्या आंसर आया? A, B, C या D? Okay, it's not a multiple correct answer, it's a single correct answer by the way guys. Yes, तो A ही आएगा या B या C या D? तो simply cricket is saying B, Sanju is saying B, Kaju Katla, okay, is saying B. Okay, dressing style is so impressive, thank you so much. Yeah, okay, actually we just had a Vedantu Premier League, है ना? तो इतनी गर्मी में खेल के हालत ख़राब हो गई थी, तो हाँ बहुत गर्मी थी यार, बेंगलुरु में बहुत गर्मी है सीरियसली. हाँ हम फाइनल हार गए 2, लेकिन इट वॉज अमेजिंग, बहुत मज़ा आया, फाइनल तक पहुँचे हम लोग, है ना? अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो इट वॉज अमेजिंग. चलो A, B, C या D क्या आंसर आया यार? B आंसर आया काफी सारे लोगों का. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, B is the right answer guys. So when I apply the property that I told you, we can reach out till here very easily, right? So the very same expression is coming, I can rewrite like this. If I write tan in terms of cot, so I can write down the same expression like this. Now this was the first expression, let me call it as I, है ना? इसको I मान लेते हैं, और एक I मेरे पास यहां से हो गया. If I add both of these equations, so I can see that something is getting cancelled. Yes, और अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो I will have such kind of an expression, यानी I की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4032. बट इट इज आस्किंग मी कि पाई बाय 4k की वैल्यू कितनी होगी. दैट मीन्स 4k की वैल्यू आई विल इक्वेट विद 4032, हेंस आई विल गेट द वैल्यू ऑफ k एज 1008. ओके, यस, सो दिस कैन बी वेरी 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 इजी यार, है ना? चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं. नाउ इन दिस क्वेश्चन आई विल गिव यू सम अमेजिंग ट्रिक बाय विच यू गाइस कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ओरली. 5 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बाय द ट्रिक दैट आई विल बी गिविंग यू, और मैं बोल रहा हूं आप लोगों को मजा आ जाएगा. ओके, मजा ही आ जाएगा. चलो तो करते हैं यार इस क्वेश्चन को. एफ ऑफ के, एफ सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है k और x का फंक्शन दिया हुआ है, और ये 1/k ऐसा लिखा हुआ है. नाउ इट इज आस्किंग कि यार f4x माइनस f6x कितना होगा. ये वैल्यू वो मुझसे पूछना चाह रहा है कि यार कितनी होगी. नाउ एक तो क्या तरीका हो सकता है, मैं इन दोनों को एक्सप्रेशंस को लिखूं और उसको सॉल्व करूं और फिर पागल हो जाऊं. बट नाउ अंडरस्टैंड कि ये भी फंक्शन x का है, ये भी फंक्शन x का है, लेकिन जो भी मेरे आंसर्स आ रहे हैं दे आर ऑल कमिंग कॉन्स्टेंट्स, यानी दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ x. सो इफ आई टेक सम वैल्यू ऑफ x एंड पुट इन दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट f of 4 and f of this f6 of x, I think I can solve my equation very easily, isn't it? So why don't we take x का वैल्यू as 45 डिग्री, क्योंकि आंसर तो मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ x आया ना बच्चों. तो इसको लिखते हैं f4 ऑफ x को लिखते हैं, तो k का वैल्यू 4 हो गया, और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2. तो 1/√2 की जब मैं पावर 4 करूंगा तो ये आ जाएगा, और 1/√2 साइन cos 45 डिग्री भी 1/√2 हो जाएगा, तो इसका ये 4 आ गया. नाउ दिस इज सॉर्टेड आउट, माइनस 1/6 टाइम्स अगेन 1/√2 टू द पावर 6 plus 1/√2 to the power 6. Just do the simple calculation and you guys will get your answer बच्चों. Just do the simple calculation and you guys will get your answer. Now how I come to know कि यार x की जगह 45 डिग्री, if I put my question will be solved. Look, the two expressions are having x in it.
and still the answers are coming independent of x. That means if I put any good value of x, I can solve my question easily, है ना? Yes, and I'm done. अच्छा, आप चाहते तो 90 डिग्री भी डाल देते तो भी आंसर सेम आता, एंड आई थिंक 90 डिग्री डालते तो और ज्यादा अच्छे से हो जाता, क्योंकि एटलीस्ट एक चीज तो जीरो ही हो जाती यार, है ना? I can put any value of x because these two expressions are of x, but the answers are coming independent of x. So yes, we can put any value of x. If we put x equals to 0 degree or x equals to 90 degree, the answer will be coming a lot more easier. Okay, hence I can say what is my right answer here. So these kind of tricks, if you use in the questions, definitely you can solve your questions orally. But if you want to do your questions subjectively, look how much time you can take in order to सी कि यार अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं. सो अगर आप x इक्वल्स टू 90 डिग्री भी डाल दोगे, x इक्वल्स टू 0 डिग्री भी डाल दोगे, x इक्वल्स टू 45 डिग्री भी डाल दोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बच्चों का काम हो जाएगा ये. ठीक है? यस, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं यार अपने एग्जामिनेशन के अंदर. नाउ दिस इज अ प्रीटी गुड प्रॉब्लम, लेकिन बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रिमाइंडर कितना आएगा या ये जो होता है. इन प्रॉब्लम्स को लेट्स डिस्कस गाइज, है ना? लेट्स डिस्कस दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. और ये प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम वेल, देन डेफिनेटली वी कैन सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, पहली बात तो, है ना? चलो बच्चों, मुझे दिया हुआ है यार कि व्हेन आई डू दिस वन, आई एम गेटिंग सम फ्रैक्शनल पार्ट. अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है यार बच्चों? फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1. Isn't it? Yes. तो यार सबसे पहले पता करते हैं कि यार when I divide this particular number, what is the remainder I get? ये पता करता हूं मैं कि रिमाइंडर कितना आता है मेरे पास. तो यार what do I do? रिमाइंडर निकालने के लिए बच्चों, रिमाइंडर निकालने के लिए I always write डिनोमिनेटर के मल्टीपल्स. तो डिनोमिनेटर के मल्टीपल्स I can write like this. एंड न्यूमरेटर्स के पावर के साथ आई ऑलवेज डील. ऑल राइट, तो 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलते रहना है. नाउ व्हाट आई हैव सेड, डिनोमिनेटर के मल्टीपल लिखने होते हैं और न्यूमरेटर की पावर्स लिखनी होती है अलग अलग. तो हमने लिख दी. नाउ ऑलवेज ट्राई टू सी इन दीज टू थिंग्स कि यार एक नंबर इधर से उठाया और एक नंबर यहां से उठाया, उनके बीच में डिफरेंस 1 हो. एक नंबर इधर से उठाओ, एक नंबर इधर से उठाओ, डिफरेंस 1 होना चाहिए हमेशा. तो आई हैव सीन कि सर यहां से 15 को उठाया अगर, और यहां से इफ आई पिक दिस 16 दैट इज 2 to the power 4, देन द डिफरेंस विल बी कमिंग आउट टू बी 1. दिस इज माई एजेंडा ऑलवेज कि डिफरेंस हमेशा मैं 1 बना दूं. डिनोमिनेटर के मल्टीपल्स लिखने हैं, न्यूमरेटर की पावर्स लिखनी है, और 2 नंबर ऐसे पिक कर लेने हैं जहां से आपकी डिफरेंस 1 बन जाता है. तो आई कैन सी दैट आई कैन राइट डाउन दिस पर्टिकुलर नंबर एज 2 to the power 3 into 2 to the power 400 divided by 15. Now this is very important thing which I have written. Why I have written it like this is because I want to make some power of 2 to the, I want to make some power of 2 as a multiple of 4, because here I am picking the power of 2 as 4, that is 16. Now just deal with this particular portion first. Just deal with this particular portion first. इस पोर्शन के साथ पहले डील करते हैं और इस 2 to the power 3 को बाहर रखते हैं अभी फॉर द टाइम बिंग, है ना? यस. तो बच्चों यार ध्यान से देखना दैट इफ यू डू दिस वन, इसको अगर आप करते हो तो you guys know that you guys can write it like this, and this means that the numerator is 16 to the power 100, which can be written as 15 plus 1 to the power 100 divided by 15. Now in the numerator I can apply binomial theorem, 15 plus 1 to the power 100. तो सारे के सारे टर्म्स में प्लस ही आएगा, एक टर्म को छोड़ के सारे के सारे टर्म्स में 15 होगा, एंड जिस टर्म में 15 नहीं होगा न्यूमरेटर में, दैट विल बी 1 ओनली. Right or not? So when you do this division, your remainder will be coming out to be 1. But always remember that there is 2 to the power 3 outside, which you need to multiply to that one. So when you multiply this 2 to the power 3 with the one remainder coming from this particular part, the remainder will be coming out to be 8. So that means when you take fractional part of, when you find out the remainder of this particular thing, it is coming out to be 8.
Now 8 by 15 has to be your fractional part because 8 से पहले वाला तो सारे का सारा 15 का मल्टीपल हो जाएगा और 8 अकेला रिमाइंडर बच जाएगा, तो 8 by 15 will be your what? It will be your 8 by 15 will be the fractional part, hence the value of k will be 8. So the method which I told you guys, always remember that method in order to solve all the remainder problems coming from the portion binomial theorem. All right, चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं. Now as you guys can see over here, this is a trigonometry का question, and in most of the trigonometry question guys, you can just simply put the values and can find out the right answer. All right, yes, okay, so let's do this problem बच्चों, let's do this problem. Now see, look at the options first, if you put, let's say, x equals to some value. Now obviously sec a and cosec a should be defined, tan a cot a भी defined होना चाहिए, sec cosec a भी defined होना चाहिए और sin a और cos a भी define होना चाहिए, तभी आपके सारे options valid होंगे. तो what you can do बच्चों कि x equals to 0 डिग्री और x equals to 90 डिग्री तो आप पुट नहीं कर सकते ऑब्जेक्टिवली अगर हम करें तो. क्यों? क्योंकि सर आधे एक्सप्रेशंस डिफाइंड होंगे, आधे एक्सप्रेशंस डिफाइंड नहीं होंगे, तो यू कांट पुट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री into these questions sir. समझ में आ गया सर? So why don't we put pi by 4 something kind of a thing? अच्छा, जब I put pi by 4 तो I see कि यार sir this value will become what? root 2, and this value will also become root 2, and root 2 into root 2 will become 2 plus 1, so this will be ultimately giving me 3 when I put x equals to pi by 4 sir. Okay, when I put x equals to pi by 4 over here, it will be giving 1 plus 1, that is 2. When I put pi by 4 over here, what I'll be getting? root 2 plus root 2, that is 2 root 2. And when I put a is equal to pi by 4, I do get what? 1 by root 2 into 1 by root 2, that is 1 by 2 plus 1, that is 3 by 2. Now all the options are distinct. That means if I put x equals to pi by 4, I can see that denominator is undefined. तो ये मुझे पहले ही देखना चाहिए था कि x equals to pi by 4 से भी मेरा काम नहीं बनेगा. तो सर अब मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया. ये मुझे पहले ही देख लेना चाहिए था कि मेरे डोमेन में pi by 4 नहीं है. तो अब मैं क्या करूं सर? अरे भाई डोंट वरी, कुछ और डाल के देख लेते हैं, है ना? यस, तो इफ आई पुट माइनस पाई बाय 4 तो देखता हूं यार क्या बात बनती है. माइनस पाई बाय 4 पे तो ये सारे के सारे डिफाइन हो जाएंगे और ये वाले भी डिफाइन हो जाएंगे, बिकॉज इन दैट केस डिनोमिनेटर तो मेरा बड़ा इजीली आ जाएगा. तो 1 over 1 upon minus 1 will be 2, and this will be over what? This will be 1 over 2, hence this will be 1. तो यहां से मैं देख लेता हूं यार कौन सा ऑप्शन when I put x equals to minus pi by 4 gives me the answer as 1. That has to be my answer यार. चाहते तो 30 और 60 भी डाल सकते थे रमाक्षा, because all the expressions are defined at those values also. So you can do these kind of questions like this so that you guys can save your time. But what I am always suggesting guys, always see the domain in the question and in the options whether it is defined or not. So from there I can ignore 0 degree, 90 degree and pi by 4. Hence I can put minus pi by 4, or I can put pi by 3 also, pi by 6 also. These values also will give me the answer of the problem. Alright, so try to do the questions like this. Now this question was asked in this year 2020 mains, but this was the question which we have covered in our regular sessions also. So if the guys who are learning from us, they guys might have seen this question in our notes guys. बहुत ही easy question है. So let's try to solve this question. Exactly ditto question हमारे notes से उठ के आया था. So this kind of the content that we guys are making over here in Vedantu, है ना? तो definitely यार 4 को हमने लिखा 2 की power 2, और 2 को जब हमने 1 by 16 से multiply किया तो it will become 1 by 8. Now this will become what? This will become 1 by 16 and so on. So I can see that when the base is same and the multiplication thing is written, I can add the powers, है ना? तो powers क्या आ जाएंगी बच्चों? Powers आपकी ये आ जाएंगी. Now you know how to deal with this power. Power is what? The power is what everyone? The power is what? 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16.
क्या है ये, सम निकाल लो खटक से और आंसर पता कर लो यार। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में भी आप कैसे क्वेश्चन ऑप्शंस को रिजेक्ट करते देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, है ना, यस ध्यान से देखना। चलो तो अगर आप देखो तो सी तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता भाई, इतना ही पार्ट है हमारा, सी कहां से आंसर होगा, तो पहले तो आप इसको रिजेक्ट कर लो, ठीक है। हाँ जी सर जी, समझ में आ गया। अच्छा, 2 की पावर 1/4 इट हैज टू बी ग्रेटर देन 1, 4 की पावर दिस इट हैज टू बी ग्रेटर देन 1, दैट मींस ऑल द नंबर आर ग्रेटर देन 1, इजंट इट? सो डी भी अपना आंसर नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो आप बिना देखे ही रिजेक्ट कर सकते थे, बस इन दोनों में आपको खेलना था, अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगा के भी देखते तो, इजंट इट? तो यार बड़ा इजी क्वेश्चन था, दो ऑप्शन तो आप देख के ही इग्नोर हटा सकते हो, एंड यू गाइस कैन सॉल्व द क्वेश्चंस यार, है ना। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है ये, बस मैं चाहता हूं कि अब आप रिमेनिंग पार्ट इसका खुद से ही सॉल्व करो। चलो आगे बढ़ते हैं यार, ये वाला प्रॉब्लम करते हैं यार, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम लगा, एंड इट वाज आस्क्ड इन 2020 ओनली, 7 जनवरी वाले शिफ्ट 1 पेपर में आया था। तो बच्चों इसको करने का एक मेथड समझ लेते हैं यार। ओके यस, एक 2-3 चीजें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है। व्हेनेवर यू सी दिस इक्वेशन बच्चों, अरे वेट अ मिनट, व्हेनेवर यू सी दिस इक्वेशन बच्चों, दिस इक्वेशन इट शुड क्लिक डायरेक्टली इनटू योर माइंड कि इसके दो रूट्स हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अच्छा, ये तो एक चीज हुई। दूसरी चीज, इफ आई गिव यू एन इक्वेशन लाइक दिस, तो इसके रूट क्या क्या होंगे, कोई मुझे बता सकता है बच्चों? इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या होंगे, कोई मुझे बता सकता है? यू शुड रिमेंबर दिस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। इसके रूट होंगे माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्यों? अरे भाई x की जगह -x डालोगे तो यही इक्वेशन आती है, दैट मींस रूट भी आपके माइनस टाइम्स हो जाएंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस वन। चलो a की वैल्यू कितनी दी हुई है सर? 1/√3 दी हुई है। ओके, सो यहां पे 1 1 1 अल्फा की जगह डाल देते हैं ओमेगा, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ये 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ये हो गया। चलो a की पावर 31 पूछ रहा है। नाउ यू गाइज नो कि यार व्हेनेवर आई डील विद पावर्स आई हैव नो अदर चॉइस बट टू मल्टीप्लाई। तो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट a इंटू a फर्स्ट गाइज, है ना। तो a इंटू a करेंगे तो ये 1/√3 के साथ अगेन मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बिकम 1/3 and I can see that I will have this kind of thing coming. Okay, ऐसे ही फिर से लिख देंगे यार। Now if you multiply the two matrices you will always see something good happening. So don't ever stop कि सर इतना बड़ा मल्टीप्लाई करूंगा क्या, नहीं। Whenever the question is regarding the powers you should always try to find out a square first. ओके तो ए स्क्वायर जब आप पता करोगे बच्चों तो यू गाइज विल गेट टू नो कि यार कुछ से हो रहा है। अगर ए स्क्वायर से काम नहीं हो रहा है तो आप अगला पावर निकालिए, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करिए, कुछ तो पता चलेगा जो फायदेमंद होगा। ओके, अगर आप वो कर लोगे तो आपका मामला बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर अच्छी नहीं आती तो अगेन ए स्क्वायर निकालो, a square into a square करो, so that you guys can find out a to the power 4. Always this is the trick in these kind of questions guys, so never ever leave them and you should try to solve them always. All right, so when you guys have calculated a square it is coming out to be this. Okay, a square का वैल्यू आपका ये आ गया। अगर आप प्रॉपर्टीज जानते हो, if you guys don't know the properties I'll write that one also for you. 1 plus omega square is nothing but equal to 0. The sum of the cube roots of unity is nothing but 0. Okay, हाँ हरी कह रहा है मेरे वाले में आया था ये क्वेश्चन। Okay, so similarly you guys can see that a to the power 4 will be coming out to be a unit matrix, and once it is coming out to be a unit matrix you guys can see what? You guys can see yaar a to the power 28 will again become unit matrix because a की पावर 4 के जितने भी मल्टीपल होंगे हाँ वो 1 1 बनते जाएंगे। तो ये भी 1 होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ऐसे करके चलते रहना है। a की पावर 28 ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? a to the power 28
into a cube, and this is nothing but identity matrix, hence your answer will be a cube only, right? So try to solve the questions like this so that you guys can maximize your score. Now this is a pretty good problem, guys. It was asked in 2019, so let's do this. Minimum number of times a fair coin must be tossed. Fair coin means the probability of getting a head as well as tail is 1/2. All right, must be tossed so that the probability of getting at least one head is more than 99%. Now it is saying at least one head. Whenever the question is at least, you should do what? Total minus not occurring. Total minus not occurring. Okay, yes. So let me write it like this, guys. 1 minus 1 is total probability. All right, minus you get none of the time you get head. No head. That means every time you get tail. So let's say you are doing n times a throw, and every time you are getting tail. So what is the probability of getting all the times tail? 1/2 into 1/2 into 1/2 into 1/2 till n times, right? Yes, so this I can write down, and I want this probability to be greater than 99%, that is 99/100 से ज़्यादा करना है. So what is the first natural number n coming? That has to be my answer, guys. So just need to solve this inequality and you guys will get your answer. So what is the trick over here? Whenever the question is about at least, what you do? Total probability minus none head is coming. None head means all the tails. All the tails on all the times means 1/2 into 1/2 into 1/2 till n times. This probability we want to be greater than 99/100, and hence we can solve the problem from here very easily. N is coming out to be 7. Yes, solve the inequality correctly बेटा. 1/2 to the whole power n 1/100 से छोटा चाहिए. अब ये 1/100 से छोटा कब आएगा? 2 to the power 5 34 होता है. ओके, वेट अ मिनट. मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स द फेयर. अच्छा हाँ, सही बात है ना, क्योंकि अगर यहां पे n की वैल्यू 6 हुई, राइट, n की वैल्यू 6 हुई, तो 1/2 to the power 6 विल बी 1/64, है ना. सो और अगर n की वैल्यू से ज्यादा हुई तो 6 पॉइंट समथिंग विल बी कमिंग योर आंसर. अब 6 पॉइंट समथिंग टाइम्स क्या होता है? 6 पॉइंट समथिंग टाइम्स तो कुछ होता ही नहीं है ना. तो नेक्स्ट नंबर ऑफ टाइम यू विल हैव टू इंक्लूड इन दिस. दैट्स इट, एंड दैट्स व्हाई +1 यू हैव टू डू. ओके, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन करते हैं. एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला. द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ the roots of this quadratic equation has the least value. That means if you are assuming that alpha and beta are the roots of this equation, you want this to be minimum. Now is it giving me minimum value के बारे में पूछ रहा है ना. और जो दो नंबर इन्वॉल्व है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, वो दोनों के दोनों पॉजिटिव भी होंगे. सो कैन यू गाइस से क्या आई कैन अप्लाई am greater than equal to gm? Yes guys, yes. If you say this, you want to find out the minimum value of alpha square plus beta square, everyone, है ना. और what you can do, देखो, और what you can do, you need the value of this expression, right? So what you can do, that you can write it down as this expression can always be written as alpha plus beta का whole square minus 4 alpha beta minus 2 alpha beta, sorry, yes, है ना. जब यहां से +2 अल्फा बीटा आएगा, -2 अल्फा बीटा कट जाएगा. सो अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज यू कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर. माइनस b/a होता है, इफ यू डोंट नो, है ना, जानते होंगे वैसे तो. सो लैम्डा -3 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा. ओके, सो ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा विल बी 2 माइनस लैम्डा, गाइज. अल्फा बीटा विल बी 2 माइनस लैम्डा. ऑल राइट, सो जस्ट फाइंड आउट दिस एक्सप्रेशन. यार ये कितना आ रहा है? इट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन लैम्डा, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कहां क्या आता है? इट इज -d/4a. इफ यू डोंट नो, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना आता है बच्चों? किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू आता है -d/4a. तो यू गाइस कैन फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक फ्रॉम हियर, and the -d/4a of this quadratic will be your minimum value of the entire expression. Okay, yes, it occurs at x equals to -b/2a, but the minimum value of the expression is -b/2a. All right, always remember this thing. If I have a quadratic like this, let's say px square plus qx plus r, and let's say I'm calling it as y equal to this. Now minimum value of y
minimum value of y occurs at x equal to minus q by 2p and it is minimum value of y कितनी है, minus discriminant by 4 of coefficient of p का mod, coefficient of x square का mod. So always remember this important concept, it will come very frequently in your examinations. So what is the right answer coming here? 2019 का ये problem था. You guys can see that this is the quadratic expression coming. तो माइनस बी बाई 2a पर जो लैम्डा का वैल्यू आएगा वही मिनिमम होगा एंड यू कैन फाइंड आउट. अच्छा, इट वाज आस्किंग कि लैम्डा का, अच्छा इट वाज आस्किंग कि वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या होगा कि इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू आए. दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट माइनस बी बाई 2a इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. यस 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 यस, है ना. इट वाज आस्किंग कि लैम्डा का वैल्यू क्या होगा कि ये एक्सप्रेशन गिव्स यू मिनिमम वैल्यू. This was the question. That means you need to find out minus b by 2a. अगर वो पूछता कि ये जो इसका मिनिमम वैल्यू जहां अकर होगा at what lambda, this was the question. अगर वो पूछता कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा तो हम माइनस बी बाय 4a निकालते, लेकिन इट इज आस्किंग एट व्हाट लैम्डा दिस विल बी हैविंग मिनिमम वैल्यू, तो वी नीड टू फाइंड आउट माइनस बी बाय 2a फ्रॉम हियर. And that will be our answer. Yes, I hope you guys got it. All right, so our aim is what? Our aim is to clear JEE Mains and we can definitely do it. Nobody can stop us in order to achieve our dream, guys. If you guys are constantly following on to these sessions, you guys will definitely fall into love in your JEE preparation and you guys will definitely kill this examination. This is what I believe. So don't forget to like the video if you are learning something from this video. Don't forget to share so that others can also learn and subscribe the channel so that you don't miss any of the notification. How many of you guys will be sharing this video? Because my mission is to build our army for the JEE 2020 mains. So it is very important that you guys share these videos if these are helping you so that we can build a team together and we guys can rock together. All right, so don't forget to share among your friends. Just take a note from this session that at least you will be sharing this session among your 5 friends. Okay, just make sure that this happens and together we guys will be coming up with very soon with the sprint sessions for all of you guys, because we know you guys can't wait and you guys definitely want to kill this examination. So once again, crack JEE 2020. This is my aim, this is your aim. Let's make this happen, guys. Right? Thank you so much all the guys for wishing me. Thank you so much and मिलते हैं next session में और फिर से मचाते हैं. Right? Don't forget to share the sessions among your friends. Thank you so much, guys. Thank you so much. Bye bye. Take care.